Too good. 100 on 10. Ah! Because basically what can possibly go wrong? इतनी मेहनत लगी इसको बनाने में, 2 सेकंड में इसने मेरा साथ छोड़ दिया। इसको तो मैं दूंगा 11 on 10. ChatGPT, why are Dutch baby pancakes called Dutch baby pancakes? 30th time I'm asking. I think whenever anybody says pancakes, the only image that pops up in our head is of these American pancakes. But honestly, pancakes could be anything. जिसके लिए you make a batter and you cook it on a pan and that makes it pancakes. And pancakes can also be sweet or savory, which technically means even dosa and chila are pancakes. Today we'll be traveling to 5 different countries and trying out their traditional pancakes to see how they actually taste. We'll be going to the US, Korea, Switzerland, Venezuela and Egypt, and it's gonna be a super fun ride. So let's get started. So guys, our next destination is Korea, another place which has actually been on my travel bucket list. But because मैं कोरिया तो नहीं जा रहा हूँ anytime soon, let's make Korean pancakes, which is called kimchi jjian. Jjian. आप समझ जाओ. Basically, I hope I'm saying it right, and it looks delicious. I'm not even a kimchi fan, but इसको ऐसा videos देख के I'm feeling so tempted. And again, making it look super easy. सबसे पहले in a bowl, let's add the maida, chili flakes and water. I have some kimchi here. इसको अंदर डालेंगे along with some spring onions and regular onions. And now we'll mix everything together. So हमारा simple 5 ingredient batter ready है, and now it's time to cook it. Ah! Okay, not bad. ये करना बना guys kimchi का पराठा, and it's actually looking really nice at this point. So kimchi jjian is ready, and now we shall serve it. Beautiful. इसको हम सर्व कर रहे हैं with a dipping sauce which has vinegar, soy sauce, sesame seeds and salt. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ा भावनाओं में बह के इसको ज़्यादा थिक बना दिया है. जो ऊपर से it's nice and crispy, अंदर it's slightly melt in your mouth like आलू पराठा but with kimchi. Flavor is bang on. Ooh, this is actually so yum and comforting, and I feel like I can have this on repeat. बहुत ही अच्छा. It still feels slightly familiar but also still extremely unique and different, and with the sauce this is really 10 on 10. Okay, now we are traveling to Venezuela and making cachapa, which are basically corn pancakes, and they look incredible. इसको बनाने के लिए मैं actually बहुत ज़्यादा excited हूँ. सबसे पहले एक blender में डाल देंगे corn, इसमें डालेंगे egg and cream, and some salt, sugar and corn flour. एंड इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो बैटर बन के रेडी हो चुका है. लेट्स स्टार्ट कुकिंग द पैनकेक्स. अब इस पे डालेंगे लॉट्स ऑफ चीज.
अब इसको कर देंगे wrap. Oh God. And we shall wait for all the cheese to melt. Alright, so the kachapa is ready and बहुत ही ज़्यादा yummy लग रहा है. इसको निकाल लेते हैं प्लेट पे and we'll serve it with sour cream, jalapenos, onion and coriander. I'm so excited to try this. For real, mouth is watering. Guys, I am shook. And I feel like, and that's saying a lot, I feel like I like this more than chole bhature. Because इतना ज़्यादा yummy है, like इसका texture, the corn वाला pancake is properly melting in the mouth, and with the cheese, the hit from the jalapeno, oh my God, this is insane. I feel like in the history of Tested by Shivesh, the 3 years that I've been doing it, I feel like this is the best recipe I've ever tried. Too good. 100 on 10. I am now making Dutch baby pancakes, which are apparently not Dutch. So I'm going to ask my old friend ChatGPT. ChatGPT, why are Dutch baby pancakes called Dutch baby pancakes? 30th time I'm asking. आपका ChatGPT भी काफी slow है. 2000 years later. ये third ChatGPT ने बता दिया हमें. हाँ, आप रहने दीजिए, दिखाइए. This story goes like this. They actually trace back to German pancakes which were brought to the US by German immigrants. And in 1990s, a Seattle restaurant started serving these oven-baked pancakes. The owner's daughter is said to have mispronounced Deutsch as Dutch. The mistake stuck and the dish came to be known as Dutch baby pancakes instead of German pancakes. तो आप समझ रहे, roots are in Germany, but we are actually going to the US and trying Dutch baby pancakes, and that's it. बनाएं अब guys, इतना time waste हो गया है. सबसे पहले in a bowl, I'm gonna add the मैदा, sugar, salt, milk, melted butter, 2 eggs and vanilla extract. Now we shall mix this to get the batter ready. Alright, so the batter is ready. अब मैं इसको करने वाला हूँ bake in the oven, but before that, I also need to put this into a cast iron skillet. And इस Dutch baby को हम bake करेंगे sounds extremely inappropriate, but for 10 minutes at 210 degrees Celsius. A few moments later. Oh. So guys, our Dutch baby is ready and it's quite deformed, but it is supposed to be slightly like this. काफी ज़्यादा interesting लग रहा है ये, and I hope it just tastes as good. I love how इसके edges इतने nice and golden हो चुके हैं, and I'm gonna serve this with some raspberries and icing sugar. गाइज दिखने में इंटरेस्टिंग तो ये बहुत ज़्यादा है, एंड आई हैव टू से दैट आज अभी तक जो भी पैनकेक रेसिपीज ट्राई हुई हैं, दे आर ऑल सो यूनिक एंड इंटरेस्टिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सूफ्ले
काइंड ऑफ अ सिचुएशन, पर मैं इसको कैसे खाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है. Floofy. ये मतलब बहुत ज़्यादा अनलाइक पैनकेक्स वाला टेक्सचर लग रहा है इसका. काफ़ी केक ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कोई बहुत ही सॉफ्ट सा केक खा रहा हूँ. एंड अगेन विद द रास्पबेरी जैम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी था एज कम्पेयर टू द रेगुलर पैनकेक जिसको आप एक एक करके बनाते हो. लिटरली पुट द एंटायर बैटर इन, ओवन में डाला एंड हो गया. सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड वेरी वेरी टेस्टी. इसको मैं रेट करने वाला हूँ, ऐसे मुझे 10 on 10 देने का मन नहीं करा, बट ऐसे काफ़ी 10 on 10 तो है. मतलब आई हैव नो कंप्लेन्स बिकॉज द एजेस आर नाइस एंड क्रिस्प, इट्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, टॉपिंग्स की पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, इट्स ईजी. सो आई एम गोना रेट दिस a 10 on 10. I am now traveling to Switzerland and making rosti, which is one of my favorite forms of pancakes. मैं फेब में जिनीवा में था where I tried this very traditional rosti at a very traditional restaurant and वो इतना ज़्यादा yummy था because basically what can possibly go wrong with crispy aloo, but I've never made it at home, so I'm going to try doing that today and hopefully it's at least slightly close to as good as that one was. सबसे पहले इन ग्रेटेड आलू का हम सारा वाटर निकाल देंगे like this, squeeze it properly and then add it into a bowl. And in grated आलू में डालेंगे salt and pepper and that's literally about it. Let's put the aloo in and spread it out. So इसको लो हीट पे कुक करेंगे and I just feel like it's such an interesting pancake recipe because technically हमने जैसे normal pancakes के लिए batter बनाते हैं वो भी नहीं किया है. It's literally just grated seasoned potatoes जिनको हमने एक round shape दे दिया है and it's already sizzling and hopefully coming together. So guys, this is looking fine. नीचे से color आ चुका है. We shall flip this, not turn this, flip this. And look at that color. And this needs to go back. Oh God, थोड़ा सा. So guys, rosti तैयार है and it looks amazing. I hope मैं इसको बिना destroy करे. Oh God, hanging on to dear life the rosti. इतनी मेहनत लगी इसको बनाने में, 2 सेकेंड में से मेरा साथ छोड़ दिया. Now you can top the rosti with whatever you like. बहुत सारी vegetables, cheeses. यहाँ पर I have some sour cream, so I'm just gonna try the rosti with that. I don't know if you could hear the crunch, but it's so nice and crisp on the top. Ooh, and I don't know इतना yummy कैसे, because it's literally just aloo, namak and salt, but the texture because grated है and then it's just so crisp to perfection that it just tastes so good. इसको मैं दूंगा 11 on 10. And imagine this with cheese and vegetables and grilled mushroom or meat if you're into it. So good. So we are traveling to Middle East and making a taif, which is a stuffed pancake and is extremely popular in countries like Egypt and Jordan. देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड द शेप इज रिमाइंडिंग मी ऑफ गुजिया जो कि हम होली के लिए बनाते हैं. अगेन दिस कैन बी बोथ सेवरी एंड स्वीट बट वील गेट टू द फिलिंग लेटर. सबसे पहले एक सिंपल सा बैटर बनाएंगे इन द ब्लेंडर जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मैदा एंड सूजी.
अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एंड वन इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट दैट वी आर एडिंग इन, जो कि नॉर्मली पैनकेक्स में नहीं डलता है, इज यीस्ट. लेट्स ऐड इन द शुगर. नाउ एडिंग इन द वाटर एंड वील ब्लेंड एवरीथिंग टुगेदर. Okay, so the batter is ready. Let's put this into the bowl and we'll let it rest for 10 minutes. Now it's time to cook our rested batter. जिसको भी ट्राइपोफोबिया है, apologies for this visual, but इसमें actually इतने सारे bubbles आ गए हैं. Another thing about these pancakes is that you have to only cook them on one side and ये बहुत ज़्यादा beautifully cook हो रहा है. मैं बस थोड़ा सा कलर और आने की वेट करने वाला हूँ and then we'll take it off the heat. Guys, it's looking nice and golden like a dosa and अब इसे निकाल लेंगे. Now जो savory version बनाते हैं उसमें they put a cheese which I don't have, so I'm gonna go with the sweet version today, जिसके अंदर we're adding raisin, coconut, walnut, cinnamon and इसके अंदर I'm gonna add some melted butter and mix everything together. कुछ खास स्मेल तो नहीं आ रही है, but we shall go ahead and fill our pancake. तो इसको ऐसे पकड़ना है, pinch the sides a little bit when ये actually साथ में stick हो रहा है अच्छे से. and अब यहाँ से इसके अंदर filling करेंगे. लाइक अ भुजिया एंड रेस्ट को भी सील कर देंगे. सो क्यूट. आई थिंक दिस हैज टू बी द मोस्ट यूनिक लुकिंग पैनकेक जो कि मैंने आज तक बनाया है और देखा भी है. एंड एक्चुअली आई एम सो सरप्राइज्ड कि ये बिना कुछ वाटर या कुछ भी लगाए ये प्रॉपर्ली सील हो चुका है अच्छे से. एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग सो क्यूट. And that is not it. A tie-up is also served with a rose-scented, lovely sugar syrup. Alright guys, tasting a tie-up for the first time ever. I hope मैंने सही किया है because again, I've never tried it. So अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो all the Middle Eastern people जिनको ये वीडियो समझ भी नहीं आ रही होगी, please forgive me. काफी बड़ा बाइट लिया मैंने, but the pancake is incredible. I love that yeasty flavor and that softness and fluffiness. इसका texture is actually 10 times better than regular pancakes. And I would pick this even over the jiggly Japanese pancakes any day. I just feel like the filling could have been slightly sweeter, but the pancake in itself is totally a vibe. You have to try this one out. I'm gonna rate this a 9 on 10 and I hope I can travel to Egypt one day, try the traditional version and also the one with cheese. Guys, एक वीडियो करने में मुझे इतना मज़ा आज तक पहले कभी भी नहीं आया बिकॉज मैंने इतनी ज़्यादा यमी एंड न्यू चीज़ें डिस्कवर करी है. दिस वॉज जेन्युइनली सो मच फन. अगर आपको कोई एक चीज़ ट्राई करनी है तो लेट दैट बी द कचापा बिकॉज दैट वॉज इनसेन, बट इवन द अदर रेसिपीज वर जस्ट सो गुड. मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा पैनकेक सबसे इंटरेस्टिंग लगा और अगर किसी और कंट्री का कोई पैनकेक है दैट यू फील आई शुड ट्राई इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, let me know in the comments. And if you would want to see more such videos on the channel, hit the like button and subscribe to my channel. And I'll see you guys next week with a brand new episode of Tested by Shivesh.